Okay, dear students, I'm going to start. Lot of time has been given to you to settle down. Let me read the 8th question. Which of the following explains a baby cries, baby boys is higher in pitch than in adults? कह रहा है कि आपको नीचे लिखी हुई चारों ऑप्शंस में से कौन सी आवाज एक छोटे बच्चे की लगेगी? मैं बताना चाहूंगा बेटे, अगर कोई छोटा बच्चा है, चाइल्ड, ठीक है, और एक बड़ा बंदा है, अडल्ट, तो सभी बच्चे याद रखें, चाइल्ड की आवाज सुनने में तीखी होती है लेकिन वो धीमी होती है। आदमी की आवाज सुनने में मोटी होती है पर ऊंची होती है। जो अडल्ट की आवाज होती है वो होती है लाउडर, लाउडर अडल्ट की, लेकिन इसमें लाउडनेस ज्यादा होगी। और जो चाइल्ड की आवाज है बेटे, ये तीखी ज्यादा होगी, इसमें श्रिलनेस ज्यादा हो, श्रिलनेस ज्यादा। और अडल्ट में क्या होगा? लाउडनेस ज्यादा। लेकिन जो अडल्ट की आवाज होगी आदमी की, वो तीखी नहीं होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। और चाइल्ड के अंदर लाउडनेस कम होती है, लाउडनेस ऊंची नहीं होती, लाउडनेस कम। तो इसका मतलब मेरे बच्चे समझ लेंगे, जो बच्चे की आवाज होती है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जितनी हाई होती है उतनी ही आवाज कानों में सुनने में तीखी होती है, जितनी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। तो जो समझदार बच्चा होगा उसने ये कंपैरिजन चार्ट बना लिया होगा, कंपैरिजन चार्ट किसका? वॉइस का। एक तरफ हमने क्या बनाया, इस तरफ चाइल्ड, इधर क्या बनाया? अडल्ट, चाइल्ड वर्सेस अडल्ट। ओके, अब जरा इधर आ जाओ। टीचर ने क्या लिखा? हायर द फ्रीक्वेंसी मोर द श्रिलनेस इन द वॉइस। इसका मतलब चाइल्ड की आवाज में ये वाला गुण ज्यादा है। और इधर देखो, एक ग्राफ बनाया टीचर ने एम्पलीट्यूड का। एम्पलीट्यूड लास्ट टाइम क्या समझाया था बेटे? अगर ये वाइब्रेटिंग बॉडी वॉइस कर रही है तो अपनी मीन पोजीशन से कंपन करते हुए कितनी दूर जाती है? एक्सट्रीम पोजीशन पर जाते जाते, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक। तो ये जो गैप होता है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। और इसको वेव में दिखाते हैं। वेव को कितनी ऊंचाई पर लेके जाते हैं या कितनी गहराई पर, उसको एम्पलीट्यूड दिखाते हैं। चाहे ऊपर दिखा दो चाहे नीचे दिखा दो, किसी एक तरफ आप एम्पलीट्यूड दिखा सकते। याद रखना बेटे, जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उतना उसका स्केयर भी ज्यादा होगा। जितना स्केयर ज्यादा होता है उतनी ही आवाज ऊंची भी ज्यादा होती है। ओके, तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने तो बच्चे के हिसाब से बात करनी है, बच्चे के हिसाब से। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ए बेबीज वोकल कॉर्ड वाइब्रेट्स एट हायर फ्रीक्वेंसी। कहता जो बच्चे के गले में यहाँ पर जो वोकल कॉर्ड है जो वाइब्रेट करती है वो हायर फ्रीक्वेंसी पर होती है। 8th की ए ऑप्शन हम कहेंगे आपकी बात सही है, क्योंकि बच्चे की आवाज में श्रिलनेस ज्यादा होती है, चाइल्ड की आवाज में तीखापन ज्यादा होता है। जब तीखापन ज्यादा होता है तो हम कहते हैं उसको या तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या पिच ज्यादा है, दोनों का एक ही मतलब है। सेकंड ऑप्शन है ए बेबी प्रोड्यूसेस अ लाउडर साउंड देन अडल्ट। नो, बी ऑप्शन में बच्चा उतनी ऊंची नहीं बोल पाता जितनी ऊंची एक बड़ा बंदा बोल पाता है। थर्ड, अ बेबी वोकल कॉर्ड वाइब्रेट एट लो फ्रीक्वेंसी। नो, सी ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि बच्चे की आवाज तो हायर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। फोर्थ, ए बेबी वॉइस हैज लोअर एम्पलीट्यूड। बच्चे की आवाज का एम्पलीट्यूड लो होता है, बिल्कुल सही। तो याद रखना 8th क्वेश्चन में ए ऑप्शन भी सही है,
डी ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन गलत। राइट डाउन दिस, राइट डाउन इन द 8th क्वेश्चन, दिस इज योर आंसर। सभी बच्चे इसमें क्या खास बात सीखी, जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है उतनी आवाज ज्यादा दमदार होती है, ऊंची आवाज होती है, लेकिन जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उतनी आवाज सुनने में कानों को चुभती हुई लगती है, तीखी ज्यादा होती है, और इंग्लिश में हम बोलते हैं मोर श्रीलनेस। ओके, अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। सभी बच्चे देखो क्वेश्चन नंबर 9, रीड द असाइनमेंट, रीड द असाइनमेंट, शाबाश एवरीबॉडी। Compare the pitch of the following sounds and arrange them in the increasing order of the pitch from lowest to highest frequency। कहता फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने इन सारी चीजों को लिखना है। आपको अलग अलग आवाजें बता रखी हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है वो सबसे बाद में लिखनी। क्या क्या आवाजें हैं बेटे देखो, शाबाश। एक आवाज में, ध्यान से सुनो, एक आवाज में एक बंदा ड्रम को बीट कर रहा है स्टिक्स के साथ, उसके हाथों में स्टिक्स हैं और उसने इस ड्रम को बीट कर रहा है, ड्रम बीटिंग। दूसरे में एक आदमी बोल रहा है, एक आदमी बोल रहा है। तीसरे में एक लेडी बोल रही है। तीसरे वाली आवाज में क्या बेटे, एक फीमेल बोल रही है, फीमेल। फोर्थ में क्या लिखा है, मॉस्किटो बजिंग, छोटा सा एक मच्छर है वो बजिंग करता हुआ, मॉस्किटो बजिंग चौथी आवाज है। पांचवी आवाज में कह रहा है कि सीटी बजाई जा रही है, विसल, सीटी बजाई जा रही है बेटे, विसल। पांचवी आवाज में विसल है। अब आप मेरे को बताओ बेटे, इन सारी आवाजों में कानों में से कौन सी आवाज सबसे ज्यादा चुभती है? सबसे ज्यादा कौन सी चुभती है, ड्रम के बीट करने की, या मेल की आवाज जैसे आपके पापा की आवाज है, या फीमेल की आवाज जैसे आपकी दीदी की आवाज है, शाबाश, या फिर ड्रम बीटिंग? सबसे ज्यादा कानों में कौन सी चुभेगी? है कोई बच्चा क्लास में जो बता देगा सबसे ज्यादा कानों में कौन सी चुभेगी? विच साउंड विल हैव हाईएस्ट स्टिलनेस बेटे? कोई अंदाजा नहीं लगा रहा। सबसे ज्यादा कानों में मॉस्किटो की बजिंग होगी, ये आएगी यहां पर। ओके, दूसरे नंबर पर सबसे कम आवाज कानों में कौन सी चुभेगी? सबसे कम, जिसको हम काफी लंबे टाइम तक सुन सकते हैं, कौन सी आवाज सबसे कम चुभेगी? ये माल्टस में एक बच्चा बता रहा है, लास्ट में। आजा बेटे माइक पे, सेंट्रल लाइन, माइक पर आकर बताओ, माइक ऑन कर लेना। ओनली वन सेक्शन में वन स्टूडेंट, और देखते हैं क्या बोलते हैं। सबसे कम कौन सी चुभेगी? सर ड्रम। बिल्कुल सही, ड्रम बीटिंग की सबसे कम होगी। शाबाश शाबाश। देखते, अब बताओ मेरे को दूसरी बात, मच्छर की आवाज सबसे ज्यादा चुभेगी, उससे कम कौन सी चुभेगी? सेकंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? सीटी की आवाज, या लेडी की आवाज, या बंदे की आवाज? शाबाश, एक बच्चा बता रहा है प्लेटो में, प्लेटो में लास्ट में बैठा एक बच्चा। आजा बेटे माइक पे, जल्दी आजा माइक पे बता दे, फिर एक्टिव हो जाओ बच्चे। देखते हैं आपका आंसर सही होता है कि नहीं। बची हुई तीन आवाजों में से कौन सी आवाज हाईएस्ट चुभेगी कानों में, हाईएस्ट श्रिलनेस? नहीं बोल रहा बच्चा, प्लेटो वाला माइक तो ऑन करो। बच्चे ने हाथ खड़ा करके नीचे कर दिया, ये बोल रहे हो? बताओ दोबारा से बताओ। फीमेल। नो बेटे, विसल की आएगी, विसल की आवाज, आवाज से
कम चुभेगी लेडीज की आवाज, उससे भी कम चुभेगी आदमी की आवाज। शाबाश, लिख लो सभी बच्चे। इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होंगी? ड्रम बीटिंग, ड्रम बीटिंग की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, उससे ज्यादा किसकी होगी? मेल वॉइस, उससे ज्यादा किसकी होगी? फीमेल वॉइस, उससे भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी? जब तीखी सीटी मारते हैं ना पुलिस वाले, तो हमारे कानों में चुभती है ट्रैफिक पुलिस वाले, उससे भी ज्यादा कौन सी होगी? मॉस्किटो बजिंग। तो हमने सारी साउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख दी हैं। सभी बच्चे नोट कर ले हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे जाने लगे हैं। सिग्नल देखो, 10th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोलता है? कह रहा है कि आप मेरे को फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड बताओ। हमसे क्या क्या पूछ रहा है? फ्रीक्वेंसी भी पूछ रहा है और टाइम पीरियड भी पूछ रहा है, दो चीजें पूछ रहा है। और हमें गिवन क्या है? अ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 ऑसिलेशन इन 4 सेकेंड्स। सभी बच्चों को बता दूं मैं, पेंडुलम क्या होता है। एक छत के साथ धागा ले लो और उसके साथ पत्थर बांध दो और इस पत्थर को ऐसे चला दो, तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा बेटे। इसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। सभी बच्चों को पता होना कि व्हाट इज दिस? सिंपल पेंडुलम। और हमें बोलता है, अभी जो टीचर ने येलो कलर में आपको दिखा रखा है, इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। ये क्या चीज दिखाई है टीचर ने? मीन पोजीशन से इधर गया एक्सट्रीम, दूसरी एक्सट्रीम, और वापिस मीन, कंटिन्यू करता रहेगा। लेकिन येलो कलर से जितना भी मैंने दिखाया है, दिस इज वन ऑसिलेशन। अब हमारे को क्वेश्चन में क्या बोला है? कह रहा है a simple pendulum oscillates 40 oscillations in 4 seconds। गिवन क्या है? 40 oscillations, 40 oscillations करता है इन 4 सेकेंड। अब आपको याद होगा पिछली क्लास में टीचर ने आपको फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या समझाई थी बेटे? टीचर ने समझाई थी फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, सर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू number of oscillations, number of oscillations completed in 1 second, completed in 1 second। समझदार बच्चा बोलेगा, सर अगर 4 सेकंड में इतनी है तो हम टोटल ऑसिलेशन को टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं, 1 सेकंड में आ जाएंगी। बिल्कुल सही। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टोटल ऑसिलेशंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम, टोटल ऑसिलेशन कितनी है? 40। टोटल टाइम कितना है? 4 सेकेंड। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 40/4, 10 हर्ट्स। 10 हर्ट्स हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई। ओके। अब हमसे पेपर में फ्रीक्वेंसी के साथ साथ टाइम पीरियड भी पूछा हुआ बेटे। टीचर ने आपको क्या सिखाया था कि हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं ऐसे। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम पीरियड निकालने के लिए मेरे को 1/फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। इसका मतलब टाइम पीरियड हो गया मेरा 1/10 सेकेंड। तो मेरे पास आंसर आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गया 10 हर्ट्स और टाइम पीरियड आ गया 1/10 सेकेंड। अब हम देखते हैं ऑप्शंस। शाबाश। ऑप्शंस देखो, 1/10 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1 सेकेंड। तो कौन सी ऑप्शन बनी? जल्दी पिकअप करके बताओ, ऑप्शन बताओ बेटे ऑप्शन। अगर आपको लगता है सेकंड ऑप्शन तो डबल हैंड, ट्रिपल है तो 3, 4 ऑप्शन है तो। सभी बच्चे कह रहे हैं सर ये कार्ल मैक्स के बच्चे बहुत अच्छे हैं भाई। प्लेटो के बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
शाबाश। सोक्रेट्स के बच्चे थोड़ा कम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ऑप्शन ढूंढना है 10th क्वेश्चन में। सभी बच्चे वन कह रहे हैं, सबको शाबाश। 10th का फर्स्ट ऑप्शन है। जिन बच्चों को ये समझ आ गया, प्लीज रेज योर राइट हैंड। प्लीज रेज योर राइट हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड इट। बेटे वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बैक साइड पे आ जाओ असाइनमेंट के। क्वेश्चन 11, द फ्रीक्वेंसी इज of the sound is 1.5 kilohertz. How many vibration it completes in 1 second? देखो फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटे, 1.5 किलोहर्ट्ज। के का मतलब होता है किलो, और हमेशा याद रखना है 1 किलो का मतलब होता है 1000। ओके। अब हमसे पेपर में पूछा क्या है, पेपर में हमसे पूछा है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी ऑसिलेशन होंगी, ये हमसे पूछा है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर बिल्कुल यही चीज तो आपने फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन बोली थी, तो वो फ्रीक्वेंसी ही पूछ रहा है। मैं कहूंगा बेटा अगर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है तो उसने फ्रीक्वेंसी देनी क्यों थी, वो तो फ्रीक्वेंसी खुद ही दे रहा है। यानी कि वो ये जानना चाहता है कि आपको फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन भी पता है कि नहीं पता। तो जैसे बच्चे को लगता है कि फ्रीक्वेंसी तो एक ही बात है, तो जो बच्चा लिख देगा कि सर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस जो है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन वो फ्रीक्वेंसी के बराबर ही होती है और 1.5 किलो हर्ट्ज है, जो बच्चा ऐसे लिख देगा उसको कम मार्क्स मिलेंगे पेपर में। क्योंकि टीचर ने सिखाया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी की इंटरनेशनल यूनिट किलो हर्ट्ज नहीं होती बल्कि हर्ट्ज होती है, हर्ट्ज। तो फिर बच्चा कहेगा सर मैं क्या करूं, तब उसको बोलना पड़ेगा बेटे अगले स्टेप में तुम्हें लिखना पड़ेगा 1.5 इंटू 1 किलो की वैल्यू। किलो की वैल्यू कितनी होती है 1000, 1000 लगा दोगे फिर हर्ट्स लगा सकते हो। तो बच्चा कहता है सर फिर तो मैं इसको आगे भी सॉल्व कर सकता हूँ, 15000 और यहाँ डेसिमल लगाऊंगा। तो बच्चा बोलेगा सर 1500 ऑसिलेशंस आ गई हैं, तो यही मेरा आंसर है। ऑसिलेशंस completed in 1 second, oscillations completed in 1 second, वही फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन होती है। तो बच्चा बोलेगा सर क्या मैं पेपर में ऐसे लिख दूं आंसर 1500? आई विल से यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। कितने बच्चों को ये समझ आ गया, रेज योर राइट हैंड, रेज योर राइट हैंड। बेटे मेरे को रिस्पॉन्ड चाहिए, जो बच्चा सुस्त होएगा मैंने बैठने नहीं देना क्लास में। ओके, समझ आ गया इसका मतलब। ये वाला पॉइंट क्वेश्चन रख देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 मेरे को आप खुद करके दिखाओगे सभी बच्चे। रीड दी असाइनमेंट एंड टेल मी द आंसर। अगर फर्स्ट ऑप्शन है तो सिंगल फिंगर, सेकंड ऑप्शन है तो डबल फिंगर, जल्दी करो। 12th क्वेश्चन, कह रहा हमारे पास एक मॉस्किटो बजिंग है, मॉस्किटो। ओके, वो बोल रहा है 500 वाइब्रेशंस पर सेकंड कर रहा है, 500 अपने विंग्स की वो कंपन पैदा कर रहा है 1 सेकंड में, इन 1 सेकंड। ये भी हमें गिवन है। कह रहा है उसका टाइम पीरियड बताओ, उस मच्छर के जो विंग्स है उनको फड़फड़ाने के लिए टाइम पीरियड बताओ। यानी जब वो फड़फड़ाते हुए एक ऑसिलेशन करेगा। फड़फड़ाने का क्या मतलब है, जैसे ये मेरे हाथ को मच्छर का विंग समझ लो, यहां से नीचे गया, ऊपर गया और वापिस मीन पे आया, इसको वन वाइब्रेशन बोलते हैं। फिर से देखो, अगर मच्छर का ये विंग हो, मीन पोजीशन से नीचे गया, ऊपर गया, फिर वापस सेंटर पे आ गया, इसको बोलते हैं वन वाइब्रेशन।
वन वाइब्रेशन के लिए कितना टाइम लगेगा? है कोई बच्चा जो कर सके इस क्वेश्चन को? एक गुड़िया टॉल्स्टॉय में येलो टी शर्ट, सेंट्रल लाइन, बताओ बेटे माइक पर आकर। स्पेक्स वाला बच्चा माइक पर आकर बताएगा। हाँ बेटे, ऑप्शन बताओ। सर सर 1/5 इक्वल 0.002 सेकेंड। ये बच्चा कह रहा है जीरो सर पॉइंट 0.002 सेकेंड। ये बच्चा कह रहा है ये ओके 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 साइलेंट। बच्चा कह रहा है ए सभी बच्चों को पता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी होता है। लेकिन बच्चा बोलेगा सर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तो दे नहीं रखी। तब मैं कहूंगा बेटे आपको पता नहीं है, वाइब्रेशन को ऑसिलेशंस भी बोल देते हैं। इसका मतलब एक सेकंड के अंदर अगर उसने 500 वाइब्रेशंस बता दी हैं, इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी ही बताई है हमें। तो दैट मीन्स हम यहाँ पर 1/500 कर देंगे। अगला स्टेप, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ बच्चों को सॉल्व नहीं करना आता, देखो कैसे करेंगे सॉल्व। हम पहले 1/5 को सॉल्व कर देंगे और 1/100 अलग से रख देंगे नीचे। 1/5 को अगर सॉल्व करें तो सभी बच्चों को पता है 0.2 आएगा और नीचे अभी 100 पड़ा ही है, तो ये बन गया 0.002 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि 12th क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर दिया। बहुत अच्छे। टॉल्स्टॉय के सेंट्रल लाइन में येलो टी शर्ट वाले प्यारे से बच्चे को फुल मार्क्स, 100/100 करेक्ट। नोट कर लो सभी बच्चे नोट करो फास्ट। क्वेश्चन नंबर 13 पे जा रहे हैं हम। 13th क्वेश्चन में भी खुद से करो एक बार। ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आपको टाइम पीरियड बताना है। ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी, ट्यूनिंग फॉर्क 512 हर्ट्ज है बच्चे, आपको टाइम पीरियड बताना है। कुछ बच्चों को ट्यूनिंग फॉर्क नहीं पता होता कैसा होता है। आप देखो लेबोरेटरी में जाओगे ना, जो अपने फिजिक्स वाले टीचर को बोलना, साइंस वाले, वो आपको दिखाएंगे इस तरह से एल्यूमिनियम की एक स्ट्रक्चर दिखाएंगे। एल्यूमिनियम मेटल की बनी हुई ऐसी स्ट्रक्चर, जो ऐसी स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं ट्यूनिंग फॉर्क। क्या बोलते हैं बेटे? ट्यूनिंग फॉर्क। कौन सी मेटल का बना होता है ये? ऑफ एल्यूमिनियम। इसके जो नीचे वाली लाइन है उसको बोलते हैं ट्रंक, और ऊपर ये जो दोनों बने हुए हैं इसको बोलते हैं प्रॉन्ग्स। प्रॉन्ग्स बनते बोलते हैं बेटे। जब हम ट्रंक से पकड़ के इसके प्रोंग को इस रबड़ के पैड के ऊपर जोर से हिट करते हैं, ये क्या बोला टीचर ने? रबर पैड। रबर पैड। जब टीचर ट्यूनिंग फोर्क को ट्रंक से पकड़ के इसके प्रोंग को रबर पैड के ऊपर ऐसे हिट करता है तो प्रोंग कंपन करने लग जाता है। जो प्रोंग होता है वो हमारा इधर इधर ऐसे ऐसे कंपन करने लग जाता है और इससे आवाज निकलने लग जाती है बच्चे। ओके। अब वो जो वाइब्रेशंस पैदा होंगी उसका टाइम पीरियड किसी बच्चे ने सॉल्व करा है, इसको कितना आएगा आंसर इसका? कोई नहीं कर पा रहा। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी, यानी 1/512। अब बहुत से बच्चों को ना, 8th क्लास के बच्चों को ये डिवीजन सॉल्व करना बड़ा मुश्किल लगता है। इसका मैं आपको मेथड बताता हूं, एक आसान तरीका डिवाइड करने का। आपने क्या करना है, शाबाश ध्यान से सुनो बच्चे, आपने करना क्या है? आपने यहां पर अल्फाबेट काउंट कर लेने हैं, 1 2 3। 3 अल्फाबेट है ना, तो आपने 1 के साथ उतनी ही जीरोस लगा देनी अपनी मर्जी से।
लेकिन ऐसे ही आप 1000 से मल्टीप्लाई करा तो 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो आप देखो बात वही बन गई, 1000 से 1000 कट। तो बच्चा कहता है सर आपने ऐसे करा क्यों? इसलिए जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा डेसिमल बिल्कुल गलत नहीं होगा, मैं इसको ऐसे डिवाइड कर पाऊंगा। 1 पे गया, देखो फिर यहाँ पर 8 आ गया, फिर यहाँ 8 आ गया, फिर 4 आ गया, 0 करूंगा, यहाँ डेसिमल आ गया, ऊपर से 0 ड्रॉप करा मैंने, और ऐसे ऐसे चलते चलते मैं आगे चलूंगा। और ये देखो 9 पे जाएगा, राइट? ऐसे हम कर सकते हैं। तो जब मैं इसको 9 पे करूंगा, फिर उसके बाद मैं इसको यहां लिख लेता हूं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1.9 और नीचे 1000 अभी भी बचा हुआ है। तो आपको पता है इस डेसिमल को नीचे ले आओ आप, 19 अपॉन एक जीरो और आ जाएगा नीचे। फिर आपको डेसिमल लगाना आता है, 1 2 3 4 डिजिट होने चाहिए, 1 2 3 4, और यहाँ पर डेसिमल बचे। इससे मैच करना चाहिए आंसर। जब इससे मैच करोगे आप, ए ऑप्शन आ गया आपका, देखो ए ऑप्शन, तो 13 का ए ऑप्शन। तो बहुत से बच्चों को डिवीजन करनी नहीं आती, इसलिए वो गलत कर देते। जिस बच्चों को ये समझ आ गया, रेज योर हैंड, रेज योर राइट हैंड। बेटे अगर समझ आ गया तो राइट हैंड करके इंडिकेशन दो ना टीचर को। प्लेटो, जो बच्चे लेजी है बेटे मेरी क्लास छोड़ दो आप, जो लेजी है वो छोड़ दो क्लास। आप इतना भी नहीं बता सकते कि टीचर को समझ आया कि नहीं। ओके, अब आपको समझ आ गया, बिल्कुल सही। वाल्टर के स्टूडेंट्स रेस्पॉन्ड करें। अगर आपको ये समझ आ गया प्लीज रेज योर राइट हैंड। वाल्टर सेक्शन, वाल्टर सेक्शन, अगर आपको ये समझ आ गया। ओके बेटे, चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पे जाएंगे, जो कि असर्शन और रीजन है। आप सॉल्व करोगे एक बार इसको। क्वेश्चन नंबर 14, assertion, sound travels faster in water than air। assertion, पानी जो है, पानी के अंदर आवाज ज्यादा तेजी से जाएगी या नहीं जाएगी हवा के मुकाबले? तो ये सही है। और इंटेलिजेंट बच्चे को साइड पे ये नोट करना चाहिए, इंटेलिजेंट बच्चे को, कि साउंड की वेलोसिटी सॉलिड में जैसे कि लोहे में सबसे ज्यादा, साउंड की वेलोसिटी पानी में उससे कम, साउंड की वेलोसिटी हवा में, यहां पर पानी लिखना, लिक्विड लिखना था बच्चे। लेट मी रेज इट। यहां पर हमारा लिखना है दूसरे पॉइंट पे लिक्विड। और जैसे कि पानी, साउंड की वेलोसिटी हवा में सबसे कम होती है। ओके, तो उसने बोला असर्शन में कि साउंड की वेलोसिटी पानी में ज्यादा होगी एयर के मुकाबले, साउंड की वेलोसिटी। तो हम उसको सही मानेंगे। रीजन, डेंसिटी ऑफ द वाटर इज मोर देन डेंसिटी ऑफ द एयर। रीजन भी सही है बेटे, याद रखना, जितना डेंस, अगर तीनों फेजेस की बात करें, सॉलिड लिक्विड गैस, जितना डेंसिटी ज्यादा होगा उतना साउंड की वेलोसिटी ज्यादा होगी। ये सभी बच्चे नोट कर लो। मोर द डेंसिटी, ये जो मैंने ऐसे करके सिंबल डाला ना ऐसे, इसको स्मॉल डी से भी लिख सकते हो, और इसका मतलब होता है डेंसिटी। किसी बच्चे को डेंसिटी का फार्मूला ना पता हो तो उसको नोट कर लेना चाहिए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सभी बच्चे नोट कर लें, बहुत काम आएगा आने वाले 10 साल में। 10 साल के लिए ये फार्मूला काम आएगा, 10 साल के लिए आने वाले। नोट कर लो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और हमेशा याद रखना है, जितना किसी मीडियम का डेंसिटी ज्यादा होता है उतना उसके अंदर साउंड की वेलोसिटी भी ज्यादा होता है। तो इसलिए 14th क्वेश्चन में असर्शन भी सही हो गया, रीजन भी सही। कितने बच्चों को समझ आ गया? रेज योर राइट हैंड, रेज योर राइट हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। बेटे शाबाश, वाल्टर करके बच्चे मेरे को कम बताते हैं। हाँ गुड गुड, बहुत अच्छे। लेट्स स्टोर इट। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन 15, इसमें असर्शन कह रहा है वॉइस ऑफ द मैन वुमेन चिल्ड्रन आर डिफरेंट। बिल्कुल सही, जो असर्शन है वो सही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेल अलग होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फीमेल से फीमेल की आवाज अलग होती है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द किड, छोटा सा किड जो है चाइल्ड, उसकी अलग होती है। मेल की अलग होती है, मेल की अलग होती है बेटे, फीमेल की अलग होती है फ्रीक्वेंसी, और चाइल्ड की अलग होती है। मेल की, फीमेल की, चाइल्ड की, सभी की अलग अलग होती है, इसीलिए उनकी आवाज में तिखापन अलग अलग होता है। ओके, श्रीलनेस ज्यादा अलग अलग होती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसने जो लिखा हुआ है, मेल में गले के अंदर दो वोकल कॉर्ड्स होती हैं बेटे। जो हमारा गला होता है ना, उसमें ऐसे दो वोकल कॉर्ड होती हैं, और दोनों वोकल कॉर्ड आपस में पैरेलल होती हैं, वोकल कॉर्ड्स। और ये वोकल कॉर्ड जब कंपन करती हैं ऐसे 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 ऐसे, तब हमारे पास आवाज मिलती है। और मैं बताना चाहूंगा कि वोकल कॉर्ड की इस चीज को लेंथ ऑफ द वोकल कॉर्ड बोलते हैं, लेंथ ऑफ द वोकल कॉर्ड। और सभी बच्चे ये याद रखेंगे कि वोकल कॉर्ड की जो लेंथ होती है वो आदमियों में सबसे ज्यादा लंबी होती है। वोकल कॉर्ड की लेंथ, एवरेज वैल्यू बताने लगा हूं। एवरेज वैल्यू आदमियों में 20 सेंटीमीटर, 20 मिलीमीटर लिखा है इसने। मेल्स में, मेल्स में 20 मिलीमीटर लिखा है, बिल्कुल सही। और लेडीज में उससे कम होती है, बिल्कुल सही। फीमेल में ये 15 मिलीमीटर होती है एवरेज वैल्यू, फीमेल में 15 मिलीमीटर। और बच्चों में और भी छोटी होती है, 10 मिलीमीटर। किड्स में, चाहे वो छोटे बच्चा मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों बच्चों में बराबर ही होती है, किड्स में 10 मिलीमीटर। ओके, तो इनमें से ये आपको पता होना चाहिए उनकी वोकल कॉर्ड की लंबाई। वोकल कॉर्ड होती क्या है? आप कहोगे सर आपको याद है आपके गले के अंदर एक एडम एप्पल होता है। मैंने कहा हाँ बेटे, मैंने देखा है ये गले के अंदर सेंटर में यहाँ से उभरा सा होता है, इसको एडम एप्पल बोलते हैं। आप कहोगे सर जो आपके गले का एडम एप्पल है ना, उसकी बैक साइड पर साउंड बॉक्स होता है, साउंड बॉक्स। मैंने कहा ओके बेटे, साउंड बॉक्स को लैरेंक्स भी बोलते हैं, LARYNX, ये भी बोल सकते हैं। इस लैरेंक्स के अंदर, इस लैरेंक्स के अंदर होती हैं दोनों वोकल कॉर्ड्स, दोनों वोकल कॉर्ड्स होती हैं। और हमारे सांस लेने की प्रक्रिया से ये वोकल कॉर्ड ऐसे वाइब्रेट करती हैं, और वाइब्रेट करने से वॉइस पैदा होती है, आवाज पैदा होती है। समझ आया बेटे? सब जिन बच्चों को ये 15th क्वेश्चन समझ आ गया कि असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, तो वो रेज योर राइट हैंड, शाबाश। रेज योर राइट हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड मीनिंग क्या है वोकल कॉर्ड का, शाबाश। डाउन डाउन डाउन। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, हरिया। क्वेश्चन 16, ह्यूमन कैन हियर ऑल काइंड ऑफ साउंड। बिल्कुल, ह्यूमन सारी नहीं सुन सकते, सॉरी, रीजन इज रॉन्ग। बच्चा कहेगा सर क्यों, सारी क्यों नहीं सुन सकते ह्यूमन? इसलिए कि जो ह्यूमन है बेटे, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकते हैं, ये आवाज ही सुन सकते हैं। और इनको बोलते हैं सोनिक वेव्स, सोनिक वेव्स। कोई बच्चा बोलेगा सर इसी को तो हम ऑडियो रेंज बोलते थे फॉर ह्यूमन ईयर। यस, इसको ऑडियो रेंज भी बोलते हैं। जो इंसान होता है इससे इधर वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, यानी कि इंफ्रासोनिक, उसको इंसान नहीं सुन सकता। इंफ्रासोनिक साउंड को इंसान नहीं सुन सकता, इसको सुन सकता है। और जो
20 हर्ट्ज से भी ज्यादा होती है फ्रीक्वेंसी, मोर देन 20,000 हर्ट्ज, उसको अल्ट्रासोनिक बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक। और बताना चाहूंगा ये इंसान अल्ट्रासोनिक को भी नहीं सुन सकता। जानवर सुन लेते हैं, कुछ जानवर सुन लेते हैं, इंसान की बात हो रही है यहाँ पर। ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग जो होता है वो सिर्फ सोनिक वेव्स को सुन पाता है। ह्यूमन बीइंग, इंसान की बात होती है। तो असर्शन इसका सही है। दूसरा बोलता है ह्यूमन ईयर इज सेंसिटिव ओनली बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। तो इसका मतलब है रीजन सही है, रीजन तो सही है, उसने कहता है इतना सुन सकता है। फिर हमें कहता है असर्शन में क्या था, वो कहता है सारी आवाजें इंसान सुन सकता है। हम कहेंगे नो, तुम सारी आवाजों की बात कर रहे हो, इसलिए तुम्हारी असर्शन गलत है, क्योंकि इंसान ये भी नहीं सुन सकता इंफ्रासोनिक, इंसान अल्ट्रासोनिक भी नहीं सुन सकता, इंसान तो सिर्फ सोनिक वेव्स सुन सकता है। जिन बच्चों को ये समझ आ गया, रेज योर राइट हैंड, रेज योर राइट हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड इट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान से पढ़ो इसको, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन 17 को। हाँ जी, क्या चीज है 17 क्वेश्चन में, क्या है बेटे पता है? सभी बच्चे अगर ध्यान से देखेंगे तो उनको समझ आएगा 17 क्वेश्चन में कौन सा जानवर कौन सी फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है, उसके बारे में बात करी हुई है। गॉट इट? सभी बच्चे याद रखना, जो राइनोज होते हैं, राइनोज, वो इंफ्रासोनिक आवाज पक्का सुन सकते हैं, राइनोज। ओके, देखो फर्स्ट कॉलम में क्या है, ऐसे बना रखे हैं उसने दो, और ऐसे बना रखे हैं। तो जो एरिया तीनों में आ रहा है, देखो ये वाला तीनों में आ रहा है, तो इसका मतलब वो सोनिक वेव भी सुन सकते हैं, अल्ट्रासोनिक भी सुन सकते हैं, और इंफ्रा भी सुन सकते हैं, क्योंकि ये वाली जगह तीनों में आ रही है बेटे, ये वाली जगह तीनों में आ रही है। जो ये तीनों आवाज सुन सकते हैं उसको हम इसमें लिखेंगे। गॉट इट? और आपको पता है इंसान किस में आने चाहिए, इंसान सिर्फ किस में आने चाहिए, सोनिक में, सोनिक में इंसान आने चाहिए। इंसान ना अल्ट्रा भी नहीं सुन सकता, इंफ्रा भी नहीं सुन सकता बेटे। गॉट इट? और एक बात याद रखनी है आपने कि फर्स्ट कॉलम जो है, इसका मतलब है ये तो हमारा फर्स्ट है ही है, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, क्योंकि इंसान को उसने फर्स्ट कॉलम में रखा हुआ है, देखो मैचिंग के लिए, राइट। तो सेकंड, ये देखो यहाँ पर इतने पोर्शन को इसने सेकंड बोला है, इतने पोर्शन को इसने थर्ड बोला है। गौर से देखो सेकंड में क्या दिखा रहा है, सोनिक भी और अल्ट्रासोनिक दोनों का कॉमन पोर्शन है। सेकंड कौन सा है, सोनिक भी सुननी चाहिए उसको, अल्ट्रासोनिक भी सुननी चाहिए, सोनिक भी सुननी चाहिए, अल्ट्रासोनिक भी सुननी चाहिए। तो आपको याद रखना, जो बैट होती है उसको अल्ट्रासोनिक सुनाई देता है, बैट को। क्लियर? तो इस तरह से आपने देख लेना, जो एलिफेंट है उसको इंफ्रासोनिक सुनाई देती है, इंफ्रासोनिक एलिफेंट को, राइट। तो अब हमारा 18th क्वेश्चन है केस स्टडी, जिसको आप खुद करके आओगे। केस स्टडी आपने कल करके आना है, और मैं आपसे इससे आंसर पूछूं। आज का पीरियड हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। Good afternoon, everyone. Okay, give me 2 minutes. I have to start a PPT. During that time, you can wind up. Okay, you can put your science things into your bag. You can just rest for a minute. So
Just relax for a minute. In progress.
Okay, so today we are going to do modal auxiliaries. Okay, so first I will tell you what is the meaning of modal. I know you have done in class, but I just want to give you a quick review of the whole thing. Okay, so modal means the mood and the attitude. Okay, so modal means you have done modal verbs. So modal verbs, modal means the mood and the attitude of the speaker. Okay, when you say I can do it, I will do it, I must do it, you must. So the what is the speaker? What is the mood? Okay, and what is the attitude? Plateau, room. There's too much talking. I think so. You should all be now good and sit properly. So this is the mood. Everybody have to remember. So it will become very much easier for you to remember in the future. Mood and attitude of the speaker. And auxiliaries are helping verbs. So you will see this is kind of the verb, like, it comes before the verb. I can speak. Speak is the verb. I can. She could swim. She could dance. You might do this. You must do this. So it usually comes before the main verb. So it is like a helping verb. Auxiliaries means helping verbs, and modal is the mood or attitude. Okay, now we'll give a quick glance at what everything is so that we can come to the exercise. I know you don't have the sheet today, and so you do have or you don't. Do you have the sheet? No? If you have the sheet, raise your hand. Okay, you have the modal sheet? You do? Surprising. Okay, let's come to this. Excuse me, ma'am. Basically, see this? Yes, Excuse me, ma'am. yes. Ma'am, actually, models worksheets are not provided to the students. Ma'am, doesn't matter because I have it on the PP. Okay, so when Okay. yeah, I am just coming, and at the end I have it on the PPT. My only concern right now is if this is properly visible to them. Is it properly visible? You can all see this? No? No, ma'am, it is not visible. Okay, not visible. Okay, then I'll have to do something about it. Excuse me for a minute because Ma'am, it is not visible. Ma'am, it is not visible. वाइट के ऊपर मत करो आप पूछिए okay. Are you able to see this clearly now? Is it visible? I want an answer. Can you all see this? Okay, good. You can. Okay. It can be read well by everyone, every single classroom. I'm just calling out the names. Karl Marx, can you read this? If yes, raise your hand. Okay, very good. Tolstoy, can you read this? If yes, raise your hand. Very good. Militaris, if you can read this, raise your hand. Very good. Plato, if you can read this, raise your hand. I want each one of you to raise your hands. Okay. Russell and Walter. Each and every group, yeah. So probably now this is much more clearer. Yes? Okay, good. Now see, yes, yeah, the screen circles. Okay. So basically now, the first one is like, they are very simple everyday words, okay, which you use every day. Like can, could, might, may, must, will, would, like, every day they come in different
Like, when we make a conversation while talking, while conversing, like, they are like everyday words. So this is, but now you'll see them in a different light. Can. Can is basically used to show ability of something. This is my short form for something. Okay, STH. In the present. Okay, I can speak English. Okay, can. Speak is the verb, and this is the auxiliary modal. It is showing my attitude, my ability. Okay, now permission. Can I go to the cinema? Okay, so can I go for the movies or cinema? Like, so it's like permission. So it will be ability, permission, request. Can you wait a moment, please? A request. So see, can be used in so many different ways. Offer. I can lend you my car till tomorrow. Offering someone. Okay. Suggestion. Can we visit grandma at the weekend? Some kind of a suggestion or possibility. It can get very hot in Arizona. Arizona is a desert place like in America. It's really very hot there. Okay. And so these kind of things can be done with and. So it uses ability, permission to show your ability, to show your permission, request someone, offer someone, suggest, and possibility. Is something possible? Okay. Now we go to the next one. Here. Good. Okay. Good is also used in many different ways. Again, ability. Okay. Now, but this is in the past. Can was in the present, could is in the past. So I could speak English. I could. Okay, it's not that now I can't, but I could. Permission to do something in the past. I could go to the cinema. Okay. Polite question. Could I go to the cinema, please? Polite request. Could you wait a moment, please? Polite offer. I could lend you my car. Polite suggestion. Could we visit grandma at the weekend? Possibility. It could get very hot in Montana. So could is basically used for politeness and in the similar ways like can. Exactly similar ways like can, but in the past, can in the present. That's it. Okay. So we come to the fourth one. May and might. Okay. It may happen is a possibility, and might is a weaker possibility. Okay, it might rain, it might rain, it might not. Okay, so possibility, basically it is possibility. It may rain today. May I go to the cinema? Permission, polite suggestion, may I help you? You're offering. Okay, possibility less possible than may. Okay, and then hesitant offer. Might I help you? Like hesitant. Somebody is like, not very comfortable or not very sure, and you want to extend your help. So, like this. Now, next. Must not, may not, need not. Okay. Now, so see, whenever we have like, positive, we have the negative also. Must, mustn't. We say mustn't also, may not, okay, needn't. So force, necessity. I must go to the supermarket today. Like something has to be done today. Okay, it has to be done today. Possibility, you must be tired. Like, if you see someone working the whole day and like, oh, you must be tired. Advice and recommendation. You must see the new film with Brad Pitt. He's my favorite, all-time favorite, okay? Brad Pitt. So, advice. You can advise someone or recommend. Then, prohibition. Like you can stop someone from doing something, okay? But a little stronger. Don't do, okay? You mustn't work on dad's computer. Strict orders, okay? You may not work on dad's computer. May is like, then use in the is not necessary. I need not go to the supermarket. We are going to the restaurant tonight. Okay, so something like that. So that is need not. Like, okay, you don't have to do that. Next.
Ought to is similar to should. Ought to sounds a little less subjective. Okay, it is similar to should. Should, ought to. Shall used instead of will. I shall. Okay, I will, I shall makes it a little more formal and more polite in the first person. So first person means it is only used with I. Okay, and should. So use is you ought to drive carefully in bad weather. Like you can say you should drive carefully, but you can also write ought to. Okay, you ought to switch off the lights when you leave the room. When I say you should switch off the lights, it's like more stress. But when I say ought to, it's like it becomes a little more polite. Okay, you ought to do this. Like I'm giving you, like, okay, be nice. When you leave the room, please switch off the lights. Okay, then the next one, ought to sounds shall. Use of shall is, shall I carry your bag? Suggestion. I shall, like, something. And the third one is should. Should is advice. It is advice, obligation. You should drive carefully. Okay? यहाँ पे ought to है, यहाँ पे should है. Both mean almost the same, but this is like more stress. This is a little less stress. Okay? Yes. You should switch off the lights when you leave the room. You ought to switch off the lights, like, a more suggestive way. Here, a more aggressive way. You should do this, like mom will tell you, do this. You should do this, like, this should be done. Your teacher will say, your homework should be done. Should be done. Okay? Yes. So, here. Will and would. Both are more like they are future tense. Okay? So, here. Will is like wish, request, demand, order. Will you please shut the door? Request. Please, Agya. I think it will rain. Okay. I will stop smoking. Can somebody drive me to the station? Okay. She's strange. She will sit for hours without asking. So it is telling about predictions, promise. Okay. Spontaneous decisions made on the spot, habits, like I will eat something. And we have would. Would is again wish, request. More polite than will. Okay. Would you shut the door, please? Will you shut the door? It's more like an order. And would you shut the door is more like a request. Okay. Both are right. Then wish and request, habits. Sometimes he would bring me some flowers, like, some flowers. So this is like, okay. So today we are done with this. I hope you have all done. So here we have the sheet. Okay. Do you have, okay, I don't know why one is missing. I had added one more here, 18th. Okay. Start doing this sheet and quickly. I give you like 5-7 minutes and then we will start discussing it. Okay, everybody? Yeah. Okay, start. When we talk about ability, it is can or could. Okay, can is for present tense and could is for when you're talking about something in the past. He blank played the piano when he was younger. So what will be the answer? Ability in the past. Okay. Yes. Tolstoy, this girl sitting in the center row, yellow t-shirt. Okay. Everyone pay attention. Socrates, lot of movement in the class. Yes, bolo. Bolo. Used to. Bolo. Used to. What? Used to. He used to.
Okay. But here it is like we are using these it is he could play the piano when he was younger. So we are using modal verbs. Used to is also it, but yes. Okay. You've been taught modal auxiliaries like used to, dare not, and all that. Have you been taught that in the class? Because I just went through your book and these were the only verbs there. So basically today we will use can, could, might, must, may, only these which we just spoke about. Okay, so you will choose from that. Okay, so he could play the piano when he was younger. He could play the piano when he was younger. Now you can start working on it. And the modal verbs which you're going to play, like kind of like, use here is these only. Let me see if I can help you out. Here we are going to use, okay, we are using can, could, may, might, okay, then will, would, shall. So these are the modal verbs you are going to use. Much more also, okay, can, could, might have, may have, like might, you can use might have, like, might have, may have, shall be, okay, will, can, could, shall, will, all these words you can use today here. Okay. Ought to, even ought to. O-U-G-H-T, ought to. So these are the words you are going to use today in these. Okay. When blank we meet again. When blank we meet again. Who will answer this? Okay, Plato. So many children have raised their hands. Okay, one of you come. The girl on my left. Yes, the first girl. Come. Okay, sometimes there can be more than one possibility. Okay, and then we have to find out which is more appropriate. When? Ma'am, can or will. When will be the shall I? Okay? It will be shall. When shall we meet again? You can write shall, or you can write will. Oh, sorry, can. Yes. So these two. When will also, like, is okay, but shall is more appropriate. Okay. So, like, it's like showing like this. Okay. Next is, when blank the magazine be published. When blank the magazine be published. It's like a direct question. Okay, I can see Russell. There is a boy who's raised his hand, little hesitant. Aja beta. Or it's only me who can see someone. Yeah, there was a boy who raised his hand and then put it down. Okay, someone from Plateau again. Very nice. Come forward, that girl. Who's bending now? The girl who raised her hand. Yes, and then bent forward. Come, come. Come. But why are you pushing other people? I'm calling you. This is so simple, like everyday conversation. Okay? Aajao, come fast. Don't waste time. Good. When? When?
Could. What? How could? And could the magazine be published? I don't think so. It doesn't sound appropriate at all. Okay. Let me use the red pen. When will the magazine be published? When will? We are asking a simple question. When will? Come. Okay. How will it? How could can come? Could is like ability, possibility, like all that, but it could not fit in here very well. Next is autumn blank come after the monsoons. Autumn blank come after the monsoons. It's a truth. Okay? ये तो होता ही है. Autumn blank come after the monsoons. Yes. Socrates, I can see a hand raised on my right. There is a boy in white shirt. Raised his hand. Aja. Yes. Autumn. It's very simple. Autumn will. Very good. Autumn. We all know autumn will come after the monsoons. Okay. Monsoon khatam hote hain, then the fall season or the autumn comes. Okay. September, October. Next is I blank walk. I blank walk. Something is being declared. Okay, something is being, and normally with I, what will you normally? I can walk तो बहुत ही stupid रखेगा. Okay, you can, but it won't be wrong though. I can walk, like if somebody says, okay, take a ride. No, I can walk. You can declare that. Yes, so can is also right. But more, what will be the other option here? I can walk के बाद. Shall I shall walk. So I can walk. I shall walk. Okay. Okay. You blank not read. You blank not read. अगर प्रेजेंट टेंस में डालेंगे तो कौन सा आएगा? यस, सोक्रेटिस, मिडिल रो, ग्रीन टी शर्ट, आ जाओ. यू can. You cannot read. Okay? Cannot read. That is, you can't read. Okay? So you cannot read. Next. Peter blank write. Peter blank write. Very simple ones so that you get the hang of it. Seventh one. Peter. Yes. Tolstoy. I can see a boy at the far corner, white shirt. He's raised his hand. Ajo. To my left. Ajo. Come. Peter. Could. Could. Couldn't भी बन सकता है. Okay, you can add couldn't. Could not write or Peter. Yes. There are so many options here. Yes. Peter. बोलो बच्चे, you came forward. आपने आंसर बोला, मैंने सुना नहीं. आप फिर से बोलो. So it is like Peter can write. Peter couldn't write. Peter could not write. Okay, you can write that also. But here we have not given anything. So basically it will be Peter can write. Peter may write. Okay, so many options are there. Next. Birds blank fly. Birds blank fly. Very simple. It's a universal truth. Okay, so यहाँ पे हम एक ही option देंगे. Okay, Socrates on my right, white t-shirt. आ जाओ. Birds. Can. Very good. See, it's a truth. Nobody can deny it. Okay. Lisa dash be 30 next Monday. Lisa dad be 30 next Monday.
Whenever, yes, yes. Karl Marx, center row, first bench. Yes, white t-shirt. Come. It will be 30 or be 30. Yeah, it is yes. Shall be will be more appropriate. But if you will write will, it won't be wrong. Okay, because we use a first with like shall be 30 or it can also be will be 30 next month, Monday. But more appropriate is shall. Okay, but will is not wrong at all. Next is they blank coming to the party later. They blank coming to the party later. We can also add might, weak possibility, might be. Because it is coming, so they might, they may. अगर कम होता तो may होता, so they might be coming to the party later. Might be. Okay. This is a weak possibility. A weak may is a is a possibility. They may come, more possibility. Weak possibility is might. Next, blank, I take the phone. Blank, I take the phone. With I, you normally use, okay, Plateau, that girl sitting on my left, okay, behind the yellow t-shirt boy. Yes, who raised her hand? The girl on my left, yeah. You raised your hand. You're sitting right behind that boy who's wearing a yellow t-shirt. Plateau, yes. Ma'am, can I? Yeah, it will be Can. shall I? Can I is also okay, but shall I? Shall I? Okay, shall I take the phone? You're asking. Okay? Yeah. Or may I take the phone? हो सकता है. Can I take the phone? Is like not the very right thing. May I take the phone? Okay. Or shall I take the phone? Normally with first person I, you will use shall. Okay. Which painting blank I buy? Now I told you, normally with I, you use shall. So you should know what should come here. Which painting 12th वाला क्या होगा? Because with I, you normally use shall. So with painting, shall I buy. He blank been hurt. He blank been hurt. Possibility. Possibility. So यहाँ से कौन सी possibility होगी? This possibility, this possibility, this possibility, this possibility, this. Been, it's been here, so you have to think. He blank been hurt. Yes. Socrates, I can see a hand raised at middle row, last bench. Come. Yes, middle row, last bench. He might have. देखिए been आ गया ना बेटे. So perfect आ गया. He might have possibility, a weak possibility. अगर might be, he might be hurt. Okay. He might have been hurt. So this is the, he may have been, may का थोड़ा कम है, so it's might. Blank. He blank lost his book. He blank lost his book. Again possibility. Again possibility. He blank lost his book. You have to see the tone of the sentence. This you will have to learn. Okay, nobody can teach you. This is something you have to understand with the language. As the language progresses, these things have to be learned, understood. Okay, and how language becomes innate in you, it becomes a part of you. So it has to become a part of you.
Okay, here Socrates. I can see the same children. Okay, the one in green t-shirt, the boy in the middle row who's raised his hand. Ajo. Again, a possibility. He blank lost his book. Yes, Socrates, I said middle row, the boy in green t-shirt. There's no one in green t-shirt. This is yellow. Okay. Or I am colorblind. May have lost his book. May have. Okay. So this is like may have. So that is a possibility. Whenever there is a possibility, may, and when there is like a weak possibility, might. He may have. May have lost his book. It blank rain tomorrow afternoon. It blank tomorrow afternoon. So again, possibility. Again, possibility. Okay. Who will answer this? Russell? Nobody has answered till now. The girls in the middle row, first bench. Ajo, one of you. Russell, middle row, first bench. Both the girls, come out. I want you to give me both the answers. Yes. Come on. One will give me the answer for 15. The other one will give me answer for 16. Ajo, come both of. Yes. Stand up. Come out. Weak possibility or other possibility. If I'm talking about tomorrow, I'm telling about like it Might be. it might, only might. Okay, it might rain tomorrow. So it is possibility. Okay, blank, go to the market. Again, possibility or surance. Okay, you can also write surance. 16th, I might go to the market, possibility. I may go to the market. I will go to the market. Okay, so many possibilities are there. Yes. Socrates, I can see a hand raised. On my left, yes, the boy who raised his hand, please come out. Sitting on third last bench. Aja. Come out. Socrates, I blank go to the market. I may go to the market. I might go to the market. I will go to the market. Okay, so many possibilities. Will is like a decision already made. Last one, he blank gone home yesterday. He blank gone home yesterday. इसमें again possibility. See, I'm giving you sentences to get the knack of these things, how to use them. He might have gone home yesterday. He might have gone home. Yesterday will to aa nahi sakta because it's future. Okay. So he can nahi aa sakta. He could have gone home yesterday. He might have gone home yesterday. Okay. So these are the modal verbs. Now let's come to the next one. This you are going to do yourself, all of you. Out of that mode. Okay, do this yourself. And do this yourself and give me a reason why you chose what you chose. Okay, this has to be done by you, yourself. I want everyone to do this. Start doing, I can see children, I know it's your time to go back home and you are like all waiting, but this won't take much long. It will just take 2 minutes, I know. You all are smart kids. Finish it. The dress suits her style. She definitely है. यहाँ word देखो definitely.
तो यहाँ क्या आएगा? Something which is sure. Yes, Tolstoy, middle row, first bench. She will. Will, very good. Because definite. Okay. This style, dress style suits her, and so she will definitely यहाँ पे है. So you see the mood and the tone. Okay, very good. When John was 2, he blank already speak very well. Again, in the past, something. So past में what will you use here? Okay, Plato, the girl who raised her hand on my left. Do you want to give me the answer? Quick, quick, quick. जल्दी से आ जाओ. Good. Very good, good. Okay, in the past, she blank visit her grandparents' house during holidays. Now, it can be like two things here. Like, one is a moral responsibility that जाना चाहिए grandparents के घर में, और एक है okay, she can like go, she cannot go. So which word? Two words are a possibility, but which word do you think will fit the best? Okay, Karl Marx, that boy in white shirt who's on my left. Jaldi se aa jao, fatafat. Yes, yes. Last row on my left. Yes, yes. Come fast. What? She can visit her. Why? Can. Okay, can is not the best option. Dare to? No. See, there is two possibilities, ought to and might. Which one do you think is the best option out of these two? Which one do you think should be the best option out of these two? Okay. I can see a lot of children raising their hands. Okay, Socrates on my right, a boy in white t-shirt, he has raised his hand. Come fast. Jaldi se aa jao. And Russell House also, a lot of children. Russell House, next question comes to you. Okay? Next question comes to you. Ought to, might. This is like a moral responsibility. Like, you should. Might. This one? Might. Yeah. She might is a possibility. She might. Okay. But I feel this is not wrong. This is the best answer. And when you get these, you should understand the tone of the sentence. Okay. So she ought to visit, like you're telling her, it's your moral responsibility. During your holidays, you should or you ought to visit it's like a suggestion, advice, her grandparents. So basically, out of 4, this is going to be the best. Ought to is going to be the best option. This is how, when you get very close words, you have to understand the tone of the sentence and then answer. Okay? Blank, I talk to the manager. Blank, I talk to the manager. Very common. Yes, may I? Okay, may I is the best option. Okay, shall I talk to the manager is also an option, but it is not right here. May I is the very traditional way of saying best option. Understand again the tone. That is why I have given you all this. During peak hours means when the traffic is too much. Okay, it blank take more than 2 hours. Something. Do you think it's a prediction or it is a reality? If it is a reality, what word should come here? During peak hours, it blank take more than 2 hours. It, जब बहुत traffic होता है आपके city में, okay, that is a jam, traffic jam. Okay, there are some bottlenecks, and you just can't move your car. So what happens? You are stuck in the jam, and it might take you more than 2 hours. So what do you say? It will, because it's like a short thing. It is understood. It is like a real thing that during traffic jams, it is expected that you will take 2 hours. So it will be will here. Okay, I still have like the last one for you, but I think so.
Are you people ready to go home? Teachers, can I take this 2 minutes? I hope. Teachers, I just request you if I can take 2 more minutes to finish this. Okay. How blank she do that to us? How blank she do that to us? How blank she do that to us? How? Very simple. Out of all the options. वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? What will you write here? और वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? Like this is the word. Yes. Karl Marx center row. Center. So it will be would is not making sense. Music is not making sense. Actually, it was must. Okay, so could. Could is the best choice here. How could she do that to us? How could? Okay. Now, if I get the required assistance, I blank pass the exam in the first attempt. If I get the required, like if somebody helps me, I will pass the exam. So what will you write down? Possibility. This is might is your, like if you get the required, you might, like, this is the possibility. The audience, blank settle before the doors are closed. We are expecting the audience to settle down before the doors are closed. Okay. So which word suits the best here? Anyone? I want just one child. Yes. Tolstoy, first bench, yellow t-shirt. Please come forward. Yes. Both of you come forward. You can answer me. The audience blank settle before the doors are closed. Must. The audience must settle before the doors are closed. We blank always respect our elders. Very simple, always used. Yes, Tolstoy, first bench, white t-shirt. Come. We can respect our elders. We should. Okay. And we save money for the party. We would, or we need, or we should. What should we do? We should. Should we save money for the party? अगर आप उसको आंसर करोगे, we should save money for the party. Okay, yeah, we should. अगर आप करोगे, would we save money for the party? Okay, we would save money for the party, which makes the best sense. Always do this and you will get the answer. So here, should we save money for the party? Okay, thank you, children. I know I took a little more time to finish today. I hope you gained a lot in the class. Thank you for your patience, teachers. Thank you very much. Have a good day.